अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सईद शेख है। मेडिकल से मेरा ताल्लुक़ है। जब भी मैं आपको एक अवेयरनेस सेशन बता रहा हूँ, ये वाक़या जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस्लामाबाद मोटरवे पर ये पेश आता है। जब ये हादसा होता है तो गाड़ी में ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका होने की वजह से पूरी आग लग जाती है। इसमें ये बच्ची तो बाहर आ जाती है जो उनकी बेटी है, लेकिन माँ अंदर जल रही होती है, जिसकी वजह से आप देखें कि बेटी किस तरह से तड़प रही है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि किस तरीके से ये वाकया रूनुमा हुआ और किस तरीके की आग जो है वो अश्कबा है कि ये वाकया अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखा करें। जब भी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अगर सिलेंडर हो गाड़ी में, बैटरी हो, उसकी वायर को चेक करें, सिलेंडर को देखें कि वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। कहीं से पेट्रोल लीकेज हो तो उसको सही करवाइए। वैसे भी हर 6 माह बाद अपनी गाड़ी का मुआयना ज़रूर करवाएं, उसकी फिटनेस लेवल को चेक करवाइए। लास्ट में मैंने एक फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के हवाले से बताया हुआ है कि उसको हम किस तरीके से इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। तुझको तुम है रहूं सबसे वाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या ही मरने। Using a portable fire extinguisher. Where an employer has provided portable fire extinguishers in the workplace for employee use, the employer should provide training to each designated employee in the safe use of these devices upon initial assignment and at least annually thereafter. The training program should familiarize employees with the hazards involved in fighting incipient stage fires and the general principles for using fire extinguishers for different classes of fire. Most fire extinguishers require 4 steps for operation. The acronym PASS can be used to remember these 4 steps. Pull the pin on the extinguisher to break the tamper seal. Aim the extinguisher nozzle or hose low towards the base of the fire. Squeeze the handle to release the extinguishing agent. Sweep the nozzle from side to side at the base of the fire until it is extinguished. Users must refrain from touching the plastic discharge horn on carbon dioxide fire extinguishers as it can get very cold and damage the skin. When responding to an incipient stage fire, these steps must be followed. Sound the fire alarm and call the fire department, if appropriate. Identify a safe evacuation path before approaching the fire. Do not allow the fire, heat, or smoke to come between you and your evacuation path. Select the appropriate type of fire extinguisher. Discharge the extinguisher within its effective range using the PSS technique: pull, aim, squeeze, and sweep. Back away from an extinguished fire in case it flames up again. Evacuate immediately if the extinguisher is empty and the fire is not out. Evacuate immediately if the fire progresses beyond the incipient stage. Evacuate immediately if there is even the slightest doubt that the fire may not be controlled by using a portable fire extinguisher.